Idioms is an important part of vocabulary building exercise, and for idioms you must understand that idiom is that phrase whose literal meaning is not taken. Whose literal meaning is not taken. And idiom is part of the vocabulary of native speakers. That's why it is difficult to understand idioms and to use idioms. Why? Because it is part of the native speakers vocabulary. Native speakers vocabulary. That's why it is difficult for those people whose language is not English. For them, English idioms is a big problem. That's why you have to focus specially on idioms. Idioms is not part of the routine vocabulary. Idiom is not part of the routine vocabulary. It is part of the vocabulary of native speakers. There are some things which are specific for native speakers. Idioms, phrasal verbs, prepositions, accent. These are specific slang words. These are specific for native speakers. So only native speakers, they can understand and they can use idioms in a natural way. For example, I say weather the storm. So weather the storm, it is an idiom, but this can be understood only by native speakers. Prepositions, idioms, accent, slang, proverbs, these belong to the category of language only for native speakers. Mother tongue. As English is not your mother tongue, you have to focus specifically on idioms, phrasal verbs, prepositions, accent, proverbs, and slang words. Slang, S-L-A-N-G. Slang, which is not formal language, highly informal language, that is called slang. S-L-A-N-G. There you can make like kind of abuses or calling names or a highly informal, vulgar kind of language. That is called slang. So please make a comment, everybody, that I will specially focus on idioms along with prepositions, accent, phrasal verbs, proverbs, and slangs, because this category belongs to only native speakers. So please make a comment. I will specifically focus on idioms, phrasal verbs, prepositions, proverbs, accent, and slang, because these belong to the category of language exclusively for native speakers. You can learn other things easily, but these things are only for native speakers.
If your mother tongue is not English, then you will have tough time to learn idioms, phrasal verbs, slangs, proverbs, accent, because this is exclusively for native speakers. मेरे इस बात का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कोई भी बंदा सीख सकता है. मसलन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ग्रामर है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स है, ये आसान है, कोई भी इसको सीख सकता है. किसी भी ज़बान का आप सीख सकते हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ जिनकी मादरी ज़बान है, नेटिव स्पीकर्स है, ये उन लोगों के लिए मखसूस होते हैं. वो चीज़ें कौन कौन सी है? वो है ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, एक्सेंट, लहजा, प्रोवर्ब्स, स्लैंग, SLANG. स्लैंग का मतलब क्या है? बाजारी ज़बान, गैर रस्मी ज़बान, गाली गलोच, ये जो दोस्त वगैरह एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, तो इसको स्लैंग कहते हैं. तो ये जो है, ये आम बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये नेटिव स्पीकर्स के लिए मखसूस है, और बंदा चूंकि नेटिव स्पीकर तो होता नहीं है, तो इस वजह से यू हैव टू यूज इट इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, एंड इट नीड्स स्पेशल फोकस. इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ मादरी ज़बान वालों के लिए है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज राइट द ईडियम वेदर द स्टॉर्म. वेदर, WEATHER, weather the storm. What does it mean? Weather the storm. Please write the idiom weather the storm. What does it mean? इसका क्या मीनिंग है? Weather the storm. Now, weather means we do not take literal meaning of idioms. Idioms का हम लफ्जी माना नहीं लेते, ठीक है? गैर लफ्जी, मेटाफोरिकल, इडियमेटिक, फिगरेटिव मीनिंग. तो इसका जो मीनिंग है वो लफ्जी नहीं होता. वेदर का मतलब मौसम है, स्टॉर्म का मतलब है तूफान, मौसम का तूफान. तो ये तो इसका मीनिंग नहीं है, लफ्जी माना हम नहीं लेंगे. नो लिटरल मीनिंग. आज के नोट्स में मैंने जितनी ईडियम्स आपको दी है, तो उसमें हम लफ्जी माना नहीं लेते. वी डू नॉट टेक द लिटरल मीनिंग. सो वेदर द स्टॉर्म मीन्स to control a difficult situation, to solve a problem, to solve a problem. एक मसला हल करना, मुश्किल सिचुएशन को सॉल्व करना. So that is called weather the storm. For example, we have another idiom, a hard nut to crack. A hard nut, NUT, nut to crack. Please write the idiom, a hard nut to crack. What does this idiom mean? A hard nut to crack. Anybody? What is the meaning of a hard nut to crack? A hard nut to crack means a tall order. A tall order. A tall order. TALLORDER. A tall order. So here we have a tall order.
A tall order means a difficult situation, a difficult work to do. So you have three idioms now. How to remember these idioms? Fake it and make it. Fake, F-A-K-E, fake it and make it. आप एक नकली फेक माहौल बनाए and then you can make it. You can do it. For example, CSS is a hard nut to crack. CSS is a hard nut to crack as it is a tall order, but with professionalism, I will weather the storm. Please write it. CSS is a hard nut to crack as it is a tall order, but with professionalism, I will weather the storm. CSS एक मुश्किल चीज़ है, ये एक मसला है, लेकिन पेशेवराना अप्रोच से मैं इस मुश्किल को काबू करूंगा. CSS is a hard nut to crack as it is a tall order, but I will weather the storm with professionalism. तो दिस इज फेक इट एंड मेक इट. हमने एक नकली सूरत हाल बनाया और हमने 3 इडियम्स यूज किए जिसको हम कभी भी नहीं बोलेंगे. टॉल, TALL, टॉल. सो CSS is a hard nut to crack as it is a tall, TALL, order, but with professionalism, comma, I will weather the storm. CSS एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं पेशेवराना हैसियत से इस मुश्किल को हल करूंगा. For example, we have idiom cost an arm and leg. Cost, C-O-S-T, cost an arm and leg. What does it mean? We have another idiom, kick the bucket. Kick the bucket. Neck and neck. Neck and neck. These 3 idioms. Please make the list of these 3 idioms. Cost an arm and leg. Kick the bucket. Neck and neck. These 3 idioms. Now fake it and make it. First, you should know the meaning of these 3 idioms. Cost an arm and leg. Kick the bucket. Neck and neck. So kick the bucket means to die. Yes, Abdul Ghaffar. What is cost an arm and leg? What does it mean? Very expensive. Something very costly. Very costly. Very expensive. Neck and neck means very close competition. Very close competition. Neck to neck. Neck and neck. So you have these 3 idioms. How can you use it in a sentence so that you remember it? We can use it, for example,
he went through neck and neck competition but could not buy the car as it cost an arm and leg, and finally he kicked the bucket. He kicked the bucket. वो महंगे कार को नहीं ले सका और आखिरकार वो मर गया, हालांकि उसने नेक नेक कंपटीशन भी किया. So neck and neck means very close competition. Neck and neck. Kick the bucket to die. Cost an arm and leg. बहुत महंगी चीज. So this way, please go through the 4-5 chapters of Exploring the World of English. जो हमारा टेक्स्ट बुक है Exploring the World of English. उसमें जो idioms के चैप्टर्स है, रेन एंड मार्टिन में भी idioms है, गूगल भरा हुआ है, मैंने आज के नोट्स में भी आपको idioms दी है, तो उन सबको पढ़े और उसको यूज करें सेफ टू में. The next topic is collocations. Collocation. Collocation means fixed order of words. Fixed order of words. अल्फाज का एक फिक्स ऑर्डर, तरतीब. हम अल्फाज को उन्हीं तरतीब में यूज कर सकते हैं, या एक लफ्ज के बाद वही लफ्ज आएगा, कोई और लफ्ज नहीं आ सकता. So this arrangement of words, that is called collocations. Now collocation can be noun plus noun. Please write it. Number 1 collocation. Collocation number 1. Noun plus noun. Noun noun के साथ आएगा. For example, cup of tea. Cup of tea. Cup of tea, it is collocation, and this collocation is noun plus noun. I can't say glass of tea. Glass of tea मैं नहीं कह सकता. मतलब चाय का प्याला हम कहते हैं, चाय का ग्लास नहीं कहते. This is called collocation. Collocation means fixed order of words, arrangement of words. A storm in tea cup. ये idiom है. A storm in tea cup. बात का बतिंगन बनाना. तो इसको हम कहते हैं a storm in tea cup. तो a cup of tea, glass of water, bed of roses. These are noun plus noun. For example, slice of bread, not piece of bread. रोटी का टुकड़ा. तो रोटी का टुकड़ा जो है, we use slice, not piece. हम piece नहीं कह सकते. Okay, for example, bar of soap. Bar, B-A-R. साबुन की जो चक्की है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? बार ऑफ सोप. उसको हम केक ऑफ सोप नहीं कह सकते. बार के साथ सोप आएगा, टी के साथ कप आएगा, ब्रेड के साथ स्लाइस आएगा. सो दिस इज कॉलोकेशंस, नाउन प्लस नाउन. इसमें कप भी नाउन है और टी भी नाउन है. Another collocation number 2, that is adjective plus noun. Adjective plus noun. For example, we say heavy rain. Heavy rain. लेकिन उर्दू में हम कहते हैं तेज बारिश. हम भारी बारिश नहीं कहते. इंग्लिश में हम हेवी रेन कहते हैं.
तो हैवी रेन जो है हम कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग रेन हम नहीं कह सकते। So number 2 is adjective plus noun. Heavy rain, not strong rain. Fast food हम कहेंगे, fast food. हम क्विक फूड नहीं कहेंगे। फूड के साथ क्या आएगा? फास्ट आएगा, क्विक नहीं आएगा। हम उर्दू में तेज खुराक नहीं कह सकते। उर्दू का अपना कॉलोकेशंस है, इंग्लिश का अपना कॉलोकेशंस है। नंबर 3 इज एडजेक्टिव प्लस नाउन के क्या हो गए? हैवी रेन। हैवी रेन। अब हैवी रेन का तर्जुमा क्या होगा? ड्रॉप ऑफ रेन नहीं भाईजान, मैंने अभी चेंज किया कॉलोकेशन। ड्रॉप भी नाउन है, रेन भी नाउन है। हम अभी बात कर रहे हैं एडजेक्टिव प्लस रेन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव इज हैवी, रेन इज नाउन। हैवी रेन या फास्ट फूड। फास्ट एडजेक्टिव, फूड एडजेक्टिव। हम क्विक फूड नहीं कह सकते। Then number 3 is verb plus noun. Verb plus noun. For example, we can say make a decision. Make a decision. We cannot say take a decision. अब उर्दू में हम कहते हैं ना फैसला करना, डू डिसीजन, या फैसला लेना। इंग्लिश में हम कहेंगे मेक डिसीजन, फैसला बनाना। सो नंबर 3 इज वर्ब प्लस नाउन। मेक अ डिसीजन, नॉट टेक अ डिसीजन। बट टेक अ शावर, नॉट हैव अ शावर। नहाना, नहाने के लिए हम क्या कहेंगे? टेक अ shower. Take a shower, not have a shower. For example, we can say get some exercise. We can't say do some exercise. अब उर्दू में जो है हम कहते हैं वर्जिश करना। तो वर्जिश करना का तर्जुमा क्या होगा? Get some exercise, not do some exercise. So these are collocations. Another type of collocation is verb plus adverb. Verb plus adverb. For example, I can say run quickly. I can't say run fastly. In English, the collocation is the fixed order of words, that is run quickly. Run quickly. So this was about idioms and collocations. As I told you that idioms are specific to native speakers, like slangs and prepositions, accent, proverbs. So it needs your specific attention. And I gave you the examples of weather the storm, a hard nut to crack, a tall order, cost an arm and leg, kick the bucket, neck and neck. And then we used these idioms in our sentences. And then we switched to collocations. Collocation is the fixed order of words. And I gave you examples of noun plus noun, adjective plus noun, verb plus noun, and verb plus adverb. Please read the notes also. In the notes also I have given you all the details. Now other parts of the notes today and the topic,
That is how to remember, retain, use vocabulary. Now, one of the formula is fake it and make it. Fake it and make it means to create situations where you deliberately, intentionally use new words. Fake it, FAKE, फेक इट एंड मेक इट का मतलब क्या है कि नकल करो, रिहर्सल करो, ताकि आपको वो चीज आ जाए। जिस तरह का आप कुछ स्टेज पे काम करते हैं तो उससे पहले आप नकाली करते हैं ताकि आपको आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो जो भी नए अल्फाज आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करो। Another is UPA, another formula that is UPA, UPA. To divide the words into 3 categories: unknown, passive and active. जब भी आप रीडिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं तो जो भी अल्फाज आप देखते हैं तो उसको 3 क्लासेस में तकसीम करें, 3 कैटेगरीज में। यू अननोन, पी पैसिव, ए एक्टिव। अननोन जिसको आप पहले दफा पढ़ रहे हैं तो उसको यू के अंडर डालो। पी पैसिव जिसको आपने पहले भी सुना है लेकिन उसको आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। और एक्टिव उसको आप वो अल्फाज जो आप इस्तेमाल करते हैं, मसलन एप्पल, टेबल, मैन, गर्ल, बॉय, ये जितनी भी ये वोकैबुलरी है ये नॉन वोकैबुलरी है। पैसिव फॉर एग्जांपल किक द बकेट। किक द बकेट जो है, हो सकता है आपने सुना हो कि इसका मतलब है मरना, लेकिन आपने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आपकी पैसिव वोकैबुलरी है। और मसलन आपने पहले दफा सुना कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। बहुत महंगी चीज को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ये आपने पहली दफा सुना, तो ये आप अननोन में उसको डाले। डेली जो आपकी राइटिंग है या स्पीकिंग है उसमें कम से कम जो है 5 से 10 अल्फाज नए होने चाहिए। नए अल्फाज आप सीखे, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से सीखे। इसी ग्रुप में ऊपर लिखा है सर्च। सर्च में आप लिखे वोकैबुलरी, तो आपके पास 300 अल्फाज के लिस्ट, 50 अल्फाज के लिस्ट, और आपके पास नई नई चीजें आएंगी वोकैबुलरी के बारे में। एंड यू शुड लिसन टू मूवी, लिसन टू यूट्यूब लेक्चर्स, वॉच मूवीज एंड रीड फॉरेन न्यूज़पेपर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, original writers. Then your vocabulary will be improved. If you have any questions, so please ask. Otherwise, today we have 3 classes, so let's go to the next class of essay writing. If you ask a question after the finishing of the class, so please tag me in the comment and I will respond to you in writing. Now let's go to Safe Essay Classroom.